माय चैनल। मेरा नाम है गरिमा भंडारी और आज के इस वीडियो में हम स्पेशली बात करेंगे विंटर योगा की। विंटर का समय होता ही ऐसा है जहाँ पे सबको मन करता है कि बस अपने बिस्तर पर अपने वार्मर को लेकर, अपनी रजाई को लेकर बैठ जाएं और हॉट चॉकलेट, चाय, कॉफी या फिर हॉट कोको पीते रहें। मेरा भी मन करता है, बट साथ ही साथ बहुत ही ज़रूरी है कि हम अपने बॉडी के ऑर्गन्स को थोड़ा सा मूवमेंट दें, थोड़ा सा ट्विस्टिंग दें, हेड को अपने हार्ट के लेवल से थोड़ा सा नीचे लेकर आएं, माइंड इन्वर्जन्स प्रैक्टिस करें एंड साथ ही साथ जो लिम्फैटिक सिस्टम है हमारे बॉडी का, उसको थोड़ा सा स्टिमुलेट करें और इग्नाइट करें। अब जब हम लिम्फ की बात कर रहे हैं तो लिम्फ के बारे में मैं बताना चाहूँगी कि वो एक क्लियर वाटरिंग लिक्विड होता है जो आपकी बॉडी में फ्लो करता है एंड जितने भी बैक्टीरियाज और वायरसेस होते हैं उनको नेचुरली फिल्टर आउट करता है आपके बॉडी से। नाउ लिम्फ का जो मूवमेंट है वो ब्लड के मूवमेंट से काफ़ी डिफरेंट है, क्योंकि ब्लड का जो मूवमेंट है वो आपकी हार्ट पंपिंग से रिलेटेड है। हार्ट जैसे ही पंप करता है वैसे ही आपका ब्लड पूरे बॉडी में सर्कुलेट करता है, जिससे कि आपके ऑर्गन्स को ब्लड मिलता है। बट लिम्फ जो है वो सिर्फ और सिर्फ मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन की वजह से होता है, मूव करता है। और मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन बहुत ही आसान तरीके से हम योगा के समय प्रैक्टिस कर सकते हैं। योगा से हमारा जो बॉडी का नेचुरल डिफेंस मैकेनिज्म है वो भी स्ट्रांग होता है, क्योंकि हमारी इम्यूनिटी सिस्टम को बूस्ट करता है डिजीज से फाइट करना। स्पेशली आजकल दिल्ली एनसीआर में आप देख रहे हैं हम लोग बहुत ही ससेप्टेबल हो गए हैं, हमारी जो लंग्स कैपेसिटी है वो डिक्रीज होती जा रही है, इतना ज़्यादा AQI जो बढ़ा हुआ है उसकी वजह से। सो हमारा जो बॉडी का लंग कैपेसिटी है वो वैसे ही कम हो गई है। सो व्हाई नॉट मेक आवर इम्यून सिस्टम सो स्ट्रांग दैट एक्चुअली इट स्टार्ट्स वर्किंग इन द मोस्ट ऑप्टिमल मैनर। सबसे पहला आसन हम करेंगे वो है उत्तानासना, यानी कि स्टैंडिंग फॉरवर्ड फोल्ड। अपने लेग्स को इस तरह से समस्थिति में लेकर आएंगे। समस्थिति यानी स्टिल पोस्चर, जो कि स्टैंडिंग फंडामेंटल पोस्चर है। और फॉरवर्ड बेंड जैसे कि उत्तानासना बहुत ही एक्सीलेंट तरीका है एक माइल्ड इन्वर्जन को एवरीडे प्रैक्टिस करने का। एंड इसको करने के लिए इनहेल एंड एक्सहेल करते हुए अपने हिप बोन्स को पीछे भेजते हुए सेंड करें एंड अपने फोरहेड को अपने लेग्स की तरफ इस तरह से नीचे लेकर आए। अपने हैंड्स को चाहे तो इस तरह से आप साथ में फोल्ड भी कर सकते हैं। मैं ये बिल्कुल नहीं कहूँगी कि आप अपने हेड को अपने हील्स तक लेकर आएं, अपने नी से टच करें, नॉट एट ऑल। जस्ट ट्राई टू ब्रिंग, अंडरस्टैंड द लॉजिक ऑफ दिस फॉरवर्ड बेंड इज टू ब्रिंग द हार्ट level, I mean the head level, below the level of your heart, so that the blood is redirected back towards your heart, towards your brain. Excellent spiritual invocation enters through your body the minute you start practicing yoga, and winter is the wonderful time where you can just come on a mat and start with this practice. Second asana that we will practice is the triangle posture. So once again, from Samasthiti, like this, feet together, hands on your side, body relaxed, opening up to your right side with an inhale. And now you can see that my body both the feet is in the same line, but my left foot is in a 45-degree, right foot is in a 90-degree angle, and my hands are absolutely straight. And then with an exhale, I'm going to drop my body actively towards the right side, trying to grab my toes and fixing my vision towards the left hand, the tip of the fingers of the left hand, and staying here for a few breaths. Trikonasana is an excellent posture to be practiced every day for opening up your entire body, strengthening your back, working on your
hamstrings, glute muscles, hip flexors, abductors, ankles, wrists, vision, neck muscles, like almost everything, and yet at the same time ignites your digestive agni, stimulates the digestive organs, massages them, squeezes out any of the trapped blood, and also leads to a strong respiration system. Moving on from here, let's try to do a seated posture. So let's start with Vajrasana, where I'm going to drop my sit bones on my heels, and heels are facing towards the ceiling, and I drop them gently on my heels, and then from here with an inhale and exhaling down and melting towards the floor, I'm going to come into Balasana or the child's pose, and I can even place a block or a pillow or a cushion here, and stay here for a few breaths. Feel the gentle squeezing of your abdomen. Slowly roll back from there to here, and then we come from here on all fours, just gently hopping onto the mat. All fours position, my arms are stacked directly under my shoulders, my knees are stacked directly under my hips, my toes are pointed outwards, and shoulders are protracted, fingers are placed by butt, and then from here it takes a lot of dynamic flexibility and muscular strength to balance out your entire body weight on just two limbs. So you need to practice that. Inhale. Exhale. Do it last time. And from here, we're just going to do one last posture, which is the twisting of your body and called as the Varichasana A. We start from the seated posture, which is the staff pose or the Dandasana, and then from here, try to internally rotate your femur, your thigh bones to activate your legs. Your toes are pointed towards you, back is straight, and belly is squeezed inside, engaging your bandhas, Uddiyana Bandha, and then the right leg, try to place it closer towards your sit bone like this, and garland your right hand like this, and try to grab your hand or interlace your fingers, or if you cannot, just let it drop to whichever range of motion your body allows to, and stay here for a few breaths. And we have to repeat all the asanas that we showed on both the sides. And last but not least, you can come in this kind of a asana where your feet is open in front of you like this, and stay here for a few breaths. Try to create a resistance from your arms on your thighs. So this was a very quick, easy sequence and a very gentle flow that can be practiced anytime, and it just requires 10 to 15 minutes of your time every day just to warm up your body parts and get that lymph movement inside your body activated.
If you like this video, give it a thumbs up. Mention in the comments below what are the other kind of videos you would like to watch. And thank you all for all your support, constant support, always encouragement, such lovely comments. A big hello to all the new subscribers, a warm hug to all the old subscribers, and I wish you good luck with all your yoga practices, and namaste and happy practicing.